in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and
some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. The first I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Lyon. So this is Siddharth, behind, please. The other Siddhant. Yes. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I really want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? You can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control. In view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. You have a question here, Rishabh? So, good evening, Rishabh from Times. Now, sir, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Caroline Nun church that has been hit. What do you have to say about it? Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. You have a question here, Brad? सर प्रणय उपाध्याय अमरजात से सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का
सवाल है मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है. Indus Waters Treaty is in abeyance, and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है. हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है. और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका जवाब दे रहे हैं. और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सिविल एयर स्पेस को बंद नहीं किया है. ये पाकिस्तान का विक्रम मिस्री और दोनों सेनाओं की तरफ से जो थोड़ी देर पहले यानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी आधिकारिक तौर पर कहा कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल बंद है, तमाम तरह की सेवाएं रोक दी गई हैं जब तक अगले आदेश या किसी तरह का फैसला होगा. लेकिन yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Operation Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudhi. Sir, obviously, thank you for the invitation. Also, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us, journalist Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmad Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl इसी पे एडलिब करेंगे, इस पे ब्रेकिंग आएगी आगे. Eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility
of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रीफिंग का जो असल मकसद है वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जो इस समय कार्रवाइयां दोनों तरफ से हो रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से रात देर गए हमले हुए, 300 से 400 के करीब ड्रोन्स का सहारा लेकर भारत के अलग अलग ठिकानों को 36 ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की गई, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे वो टर्किश ड्रोन अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए गए। एक तो इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि जब यह हमला हो रहा था, पाकिस्तान ने ऑफिशियली 3 दिन पहले जो अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं वो एक्चुअल में एयर स्पेस बंद नहीं हुआ है, जबकि सिविल जो एयरलाइंस हैं, सिविल कंपनियां इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इन तमाम को एक ढाल के तौर पर या शील्ड के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करा। और यह भी कहा गया जब हमला हुआ एयर स्पेस ओपन था, लाहौर से कराची फ्लाइट नंबर भी बताया गया कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कि वो फ्लाइट है, और रूट्स भी बताए गए किस रूट्स पर वो उस वक्त एक्टिव थी। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ दुनिया के सामने ये बताना कि तमाम इलाकों के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, भारत ने इंटरनेशनली, पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इन हमलों के वक्त सारे इलाकों को, सारे ठिकानों को एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि सिविल एयरलाइंस को भी भारत के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल करने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। और इस बीच जिन इलाकों के अंदर ड्रोन से टारगेट जो फिक्स किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, वहां जवाब दिया गया। चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली अमृतसर के अंदर एयरबेस को तुर्किश ड्रोन से स्ट्राइक करने की कोशिश, एक उस पर जवाब, और दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी जो अभी सस्पेंड है फिलहाल, अगला जब तक कोई आदेश ना आए या कोई फैसला भारत सरकार की तरफ से ना लिया जाए उस पर ज़्यादा बात नहीं की गई। लेकिन विक्रम मिस्री के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच, इस तनाव के बीच, एक आरोप ये भी लगा था कि करतारपुर ननकाना साहब गुरुद्वारे को टारगेट किया गया है। ये सरासर झूठी और बेबुनियाद खबरें हैं, डिनाई किया गया, इस तरह की खबरों से बेबुनियाद करार दिया गया। और एक बड़ी बात और कि करतारपुर कॉरिडोर पर फिलहाल जो भी सर्विसेज थी अभी भी सस्पेंड है। वो जो 23 तारीख के बाद कुछ बड़े फैसले हुए थे उसका असर इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग मकामात पर कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक जब हमला हो रहा था तो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश हुई, और घुसपैठ की इस कोशिश को भी नाकाम साबित कर दिया गया। टंगधार से लेकर पठानकोट, उड़ी, उधमपुर, जम्मू, सांबा के अंदर सारे टारगेट्स फिक्स किए गए थे। 36 जगहें, 400 के आसपास ड्रोन्स, और तमाम इलाकों के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले से एक्टिवेट किया गया था। कर्नल कुरैशी के मुताबिक तमाम जगहों पर इन टारगेट्स को नाकाम कर दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 6 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए खास प्रोग्राम न्यूज़ एट 6।